Hello learners, welcome back to my channel Math Mustard. We have already started with the class 10th real numbers chapter. In this, we are going to study the fourth part of the video, that is theorem 1.2. Let us see what the theorem says. Theorem 1.2. Let p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. It means that suppose I take a number prime p as 5. So 5 is a prime number, we already know that, right? So if p divides a square, let me take a square as, give me a moment. Okay, let me take a square as 25, right? Now we know that 5 divides 25. 5 is a 25, right? So they are saying that if I take the same p, I can divide a also. So if a square is 25, what will be a? A will be 5. तो क्या 5 5 को डिवाइड करता है? Yes, 5 5 को डिवाइड करता है, 5 25 को भी डिवाइड करता है. अगर सपोज मैं लूंगी p इज इक्वल टू 7, तो क्या 7 ए स्क्वायर को सपोज मैं लूंगी ए स्क्वायर एज 49. ठीक है, हम ये 49 क्यों लिया है? क्योंकि ए स्क्वायर मतलब 7 49 को डिवाइड करता है, इसलिए मैंने 49 लिया है. ठीक है, तो 7 49 को डिवाइड करता है, तो ए क्या आएगा यहाँ पे? 7 7 जा 49, सो ए आएगा 7, राइट? अगर ए 7 है तो ए स्क्वायर 49 होगा. यहाँ पे ए 5 है तो ए स्क्वायर 25 है. तो इसका मतलब 7 7 को डिवाइड करता है. yes, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. So yes, this theorem makes sense that if p is a prime number, p divides a square, then p also divides a, where a is a positive integer and p is a prime number. Okay, now let us move ahead to the next theorem. Theorem 1.3, root 2 is irrational. So irrational number मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर्स, हमने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर्स कभी टर्मिनेट ही नहीं होते, मतलब वो चलते जाते हैं, राइट? सो ये क्या है? 2.164 goes on. So this is an irrational number. Suppose if I take the non-terminating repeating, see now here 1426 is repeating, right? So this is repeating non-terminating and this is non-repeating non-terminating. So these both are irrational numbers. Okay, so they are saying that root 2 is always an irrational number. So let us prove this, that root 2 is an irrational number. Okay, so how do we prove it? First of all, we will suppose root 2 is rational number. तो हम लोग यहाँ पे ऐसे उल्टा सपोज कर रहे हैं कि रूट 2 है ना, हम लोग ले लेते कि सपोज रूट 2 इज रैशनल नंबर. ठीक है, तो आगे क्या होगा? अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होगा? a बाई बी के फॉर्म में होगा या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, राइट? रैशनल नंबर्स हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होता है. तो यहाँ पे भी सेम ही हम लोग कंसिडर करेंगे, सच दैट सिंस b is not equal to 0 and a and b are co-primes. So co-primes मतलब क्या होता है? co-primes मतलब इन दोनों में वन ही फैक्टर होगा, मतलब नंबर 1 जो होगा वही कॉमन होगा. सो वंस अगेन b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b ऐसे नंबर्स हैं कि ये क्रो प्राइम्स है. को प्राइम्स मतलब इनके बीच में एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, दैट इज 1. Okay, only one number is common in both of them. One factor is, they are only divisible by 1. Okay, let us move ahead. Now squaring on both the sides. Squaring on both the sides. Now when we square on both the sides, we get root 2 whole square is equal to a by b the whole square, right? And then when we square, then we get root 2 का whole square is 2,
which is equal to a square upon b square. Now when we shift this b square this side, it becomes multiplication. Now here it is in division form, here it goes and it becomes multiplication. So which means 2b square is equal to a square, right? 2b square is equal to a square. Now look here carefully, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 2 है अगर हम यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। Therefore 2 divides a square। अभी हमने थ्योरम 1.2 पढ़ा था जहां पे हमने देखा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को p प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। Therefore it means 2 also divides a। इसका मतलब 2 divides a square, it means 2 also divides a, right? By theorem 1.2। ओके, ये थियरम लगा के हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। सो वी विल सपोज दैट we'll take a consideration. It means that if 2c is equal to a, suppose we will say that if 2 is dividing a square, it means 2 is also dividing a, right? So we will see that let 2 into any number c, any integer c, where c is an integer. Okay, so if 2 is dividing a square, it means 2 also divides a. So let 2c is equal to a. Now in this equation we are going to put a का जो नंबर हमने अज्यूम किया है 2c। ठीक है, उस इक्वेशन में हम लोग डाल के देखते हैं। पहले इस इक्वेशन को हम लोग 1 दे देते हैं। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 देते हैं, इसको हम लोग 2 एज्यूम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट 2 in 1, what will we get? 2b square is equal to 2c the whole square। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट यहाँ पे a की जगह पे ये जो a है ना, इसकी जगह पे ये a की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है इधर। ठीक है, हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये 2b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, c का स्क्वायर इज c। देन वी गेट हियर when this 2 divides this 2 goes here, it will divide this 4 and it will become 2c square। now carefully look here, 2 into c square is equal to b square। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जाके क्या ये b को डिवाइड कर सकता है? यस टीचर, ये कर सकता है। 2 ये b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। therefore 2 divides b square, which means again 2 divides b। अगर ये जो b स्क्वायर है ये इसको 2 डिवाइड कर रहा है, if 2 divides b square then 2 also divides b, theorem 1.2, right? इसका मतलब अगर हम b को भी ऐसे ही एज्यूम कर ले, b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा कि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जो 2 है ये b को भी डिवाइड करेगा। तो अगर हमने b इज इक्वल टू कोई और कांस्टेंट ले लिया, सपोज मैं ले लूँ यहाँ पे d, ओके, दैट मीन्स 2 इंटू डी, ये c स्क्वायर की जगह पे मैंने सिर्फ d डाला और कुछ भी नहीं। सो 2 इंटू d इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1 और 2 से देखो कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट्स निकल रहे हैं कि हमने पहले ही यहाँ पे अज्यूम किया था
कि यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम्स है, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही हो सकता है और कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। बट जब हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन किया और हमने जब ये सॉल्व किया तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें 2 भी कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है फ्रॉम 2 एंड 3. This is 3. From 2 and 3 we can see that from 2 and 3 we can see that 2 divides A and B, which is a contradiction to the fact that A and B are co-primes. Therefore, our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. Root 2 is irrational. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या स्टेप्स लिए, हमने ये कंसिडर किया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है जहाँ पे ए और बी को प्राइम्स है और बी नॉट इक्वल टू 0। हमने बोथ द साइड स्क्वायर किया, हमने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिला। हमने फिर देखा कि 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, विच इज कॉन्ट्रोडक्टरी हियर बिकॉज 2 ए वॉज अ को प्राइम नंबर, वन ऑफ द को प्राइम्स। सो ये हो नहीं सकता है कि 2 ए को डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही हमने रिजल्ट्स देखे कि 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को डिवाइड कर रहा है, विच इज अगेन कॉन्ट्रोडक्टरी बिकॉज बी वॉज अ को प्राइम नंबर। देयरफॉर आर कॉन्ट्रोडिक्शन, हमने जो assumption किया था कि रूट 2 रैशनल नंबर है वो रॉन्ग है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सेम गोज विद द रूट थ्री को भी हम ऐसे ही करेंगे, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, और ऐसे ही सॉल्व करके हमको मिलेगा कि रूट 3 जो है ए और बी को डिवाइड कर रहा है, विच इज अगेन कॉन्ट्रोडक्टरी, एंड रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लेट अस मूव अहेड एंड सी एग्जाम्पल 6। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 सेज 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। सो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हमको प्रूव करके दिखाओगे वो इरेशनल है। सो अगेन हम कॉन्ट्रडिक्शन को थ्रू ही प्रूव करेंगे इसको। सो हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। सो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कोई भी नंबर। 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बाय स्क्वायरिंग we get 5 minus root 3 whole square is equal to p upon q का whole square. Now when we square this we get a square minus b square is equal to 2ab. Do you know that formula, a minus b का whole square? Okay, it is a square plus 2ab minus b square, right? It's wrong. Okay, it's a square plus b square minus 2ab. Okay, now moving ahead and using the same formula here, what do we get? Y square minus or else plus root 3 whole square minus 2 into 5 into root 3, which is equal to p square upon q square. Now after solving this, what do we get? We will get 25 plus 3 minus 10 root 3
is equal to p square upon q square. Again, we will solve this. 25 plus 3, 28. 28 minus 10 root 3 is equal to p square upon q square. Now, when we will send this number this side, now look here. They are saying that this number is irrational. This number is rational. But here you can see root 3, and we know that root 3 is irrational number. So how can this be rational? This is contradictory, right? This is contradictory fact that since root 3 is irrational, p upon p square upon q square will be irrational, which is contrary. Contradiction. Therefore, 5 minus root 3 is irrational. Okay? Yes. Now, moving ahead to the last example of the chapter, example 7, show that 3 root 2 is irrational. Again, here we will assume that same way we have to solve everything is rational. It means a by b or p upon q form is equal to p upon q, where q is not equal to 0. P and q are co-primes. Co-primes? Okay. Now see here, squaring both the sides, we get 3 3s are 9 and 2 root 2 square, that is 2. It is p square upon q square. 18 is equal to p square upon q square, which means that 18 into q square is equal to p square. Now, if 18 divides p square, it also divides p, right? By the theorem 1.2, we can see that if 18 divides p square, it also divides p. This is equation number 1. Now, let 18 into c is equal to p. So, this 18, if 18 is dividing p square, 18 is also dividing p. Therefore, we have assumed that suppose that 18 into something, any number, is equal to p. It means here we can see that 18 is also dividing p here, because 18 is dividing p square, 18 will also divide p here. Moving ahead, we will assume this. We will put this value in this equation number 1. Put 2 in equation 1 here. p स्क्वायर की जगह पे हम लोग 18c की वैल्यू डाल रहे हैं, तो क्या मिलेगा? 18q square is equal to 18p the whole square. Okay. Yes. Let me just add a slide. Okay. Now, moving ahead, we had assumed, as you can see already, we had assumed that 18c is equal to p. It means that 18 is dividing p here. Then we put this p square ka value as 18c square. 18c square, just make the corrections. Here it is 18c square. Okay, it is 18c. Yes. So we get 18q square is equal to 18 into 18 c square. So what is 18 into 18? It's now
Now see here, look carefully. Can I divide this 18 by 18? This 18, can I cut this 18 by 18? Yes, I can do that. So when I cut this 18 and cut this 18, I get q square is equal to 18c square. Therefore, if 18 divides q square, it also divides q, right? If this 18 is dividing q square, it will also divide q. Therefore, 18 into d is equal to q, right? Which is equation number 3. Therefore, from 2 and 3, it is a contradiction that 18 divides p and q, as p and q are what? Co-primes. As p and q are co-primes, there should be only one common factor between them, that is 1. But here we can see that 18 is dividing both of them, p and q. That is contradiction. Therefore, our assumption is incorrect, and 3 root 2 is irrational. Okay, yes, I hope you might have understood all the examples and theorems which I taught you today, and hope you enjoyed this video. Please like the video and subscribe my channel, and I will be taking the next exercise in the next video. Thank you for watching. Bye.